बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है माय लिटिल स्प्राउट हाउस। सो रुद्र के साथ हमने ये माय लिटिल स्प्राउट हाउस कैसे किया, क्या बनाया, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो आपको तो पता ही है कि हमने पिछले बार लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग ये सारे टॉपिक्स किए थे। सो इस बार का टॉपिक है माय लिटिल स्प्राउट हाउस। टेल मी व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट? Life cycle of a plant is seed, sprout, seedling, plant. Good. And what are the parts of a plant? Parts of the plant is root, stem, leaf, flower. Good job. So what is left now? What are the needs of the plant? Needs of the plant is there is four and They are sunlight, air, water, and the last but not least, soil. Good job. बच्चों को लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट ये कैसे समझाना, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। सो उसी में ही एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है माय लिटिल स्प्राउट हाउस। सो उसमें हमने क्या किया है, एक ड्राइंग शीट पे हमने उसे बना लिया था कलर करके। हमने एक टेम्पलेट बना लिया है ताकि हम जब जिपलॉक बैग में उसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। एक उसके लिए रिक्वायरमेंट लगेंगी एक टेम्पलेट, जिपलॉक बैग, बीन्स, जैसे सीड्स के लिए हमने बीन्स यूज़ किया था, राजमा जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहता है, या आपके पास ग्रीन ग्राम्स होंगे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वाटर लगेगा स्प्रिंकल करने के लिए और टिश्यू पेपर। और ये हम इन्हीं कुछ चीज़ों से ही हमने वो लिटिल स्प्राउट हाउस बनाया है। बट वो कैसे बनाया है और वो धीरे धीरे कैसे ग्रो करके उसमें कैसे स्प्राउट आया है, वो सब देख के बहुत मज़ा आया। तो चले रुद्र वो सबको दिखाए। हाँ। चलो देखते हैं हम माय लिटिल स्प्राउट हाउस। चलो। So we need this first template, ziploc bag, seeds, tissue paper, and water. Let's start. Okay, so we need to put this here. Now what you have to do? We will stick this. So now we need the water, and now what you have to do, like this. Now we will put this tissue in the ziploc bag. Now we put this seeds inside. Now we will stick my little sprout house here. Now we have to sprinkle the water every day, and we will watch how the seeds are growing. After few days, we will check my little sprout house. Okay, so I think this is done. So look friends, my little seed has some sprouts. It's so much fun to watch it to grow. Thank you, bye. Please like, share and subscribe our channel.